मैडम स्टूडेंट्स को ज्वाइन करो बोलो मैडम, जल्दी जल्दी। G-E, huh? Orange. O-R-A-N-G-E, orange. Yellow. Y-E-L-L, audible, yellow. Y-W-H-I-T-E, white. W-brown, B-R-O, W-N, brown. Black, B-L-C-B-B-L-A-C-K, black. B-L-C-B-L-A-C-K, black, huh? Blue, B-L-U-E, blue. Red, R-E-D, red. Green, G-R-E-E-N, green. Orange, O-R-A-N-G-E, orange. Yellow, Y-E-L-L, audible, yellow. White, W-H-I-T-E, white. Brown, B-R-O-W-N, B-L-A-C-K, black. Brown, B-R-O-W-N, brown. B-R-O-W-N, brown. Blue, B-L-U-E, blue. Blue, red. Blue, B-L-U-E, blue. Red, R-E-D, red. Red. Green, G-R-E-E-N. G-R-E-E-N, green. Orange, O-R-A-N-G-E, orange. Yellow, Y-E-L-L-O-W, yellow. White, W-H-I-T-E, white. Brown, B-R-O-W, brown. Black, B-L-A-C-K, black. Pink, P-I-K-E, pink. P-I-N-K, pink. P-I-N-K. I-N-K. P-I-N-K. Pink. Nose, eyes, ear, hand, leg, lips, stomach, feet. एक है Feet sad. हैं? तूने मम्मी पूछे तेरा happy. Head, bed. मैडम स्टूडेंट्स नहीं आए अभी? कितना बड़ा होगा blue, red, R-E-D, red, 100. Green, G-R-E-E-N, green. Orange,
ORANGE orange yellow 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 roll white WHI Good afternoon, dear students. Good afternoon, sir. मैं 2:15 से वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. क्या है टाइम क्लास का आप लोग का? आप आ रहे कब बोलो मेरे को? हाँ, सभी को बोल रहा हूँ मैं. मुर्तजा, नुमेरा, शाइस्ता, जाहिद, हारिस, क्लास का टाइम क्या है? आप लोग कौन से टाइम पे आ रहे बेटा? आमीना, हाँ, 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ मैं क्लास में. आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या
चलो problems on circular motion. First question. See the question. If the length of seconds hand, if the length of seconds hand of a clock is 10 centimeter, the speed of its tip in centimeter second inverse is nearly. चलो जल्दी से बताओ. The length of the seconds hands of the clock दे रखा है basically. We need to calculate the speed of its tip. Seconds hands in a clock length given is 10 centimeter. We need to calculate the speed. We know that the seconds hands of a clock will be moving in a circular path around the circle with an angular velocity of omega. So omega is equals to 2 pi radians. One complete rotation के लिए omega is equals to 2 pi radians in how much time beta? In 1 minute, in 60 seconds. That means omega will be equal to pi by over 30 radians per second. Isn't it? So we need to calculate what speed of its tip. Speed of its tip मतलब ये जो tip है basically its tip is moving with a velocity v. So v is equals to your r into omega. R is given as of your length. So this length into omega. Length is given as of your 10 centimeters. So I'm writing 10 into omega value is nothing but pi by over 30. So that will become how much beta? So this one and this one will get cancelled. So this will be equal to how much for me? Pi by 3 radians per second. Clear? So V is equals to pi value is how much? 3.14 divided by 3. So that will be approximately 1.046. So approximately I can make it as 1 centimeter second inverse. आया सभी को? Yes, sir. Is it clear for everyone? Yes, sir. चलो. Second question देखो. A rotating wheel changes angular speed from 1800 rpm to 3000 rpm in 20 seconds. First of all, what is the angular acceleration? What is the angular acceleration assuming to be uniform? Come on, try it. We have got a wheel which has been changing its angular speed from what condition beta? Omega 1 is equals to angular velocity is omega 1 is equals to 2 pi into your n1, where n1 is given how much per minute the problem? 1800 revolutions per minute. In the same way n2 is given as of your how much? 3000 revolutions per minute.
isn't it? In how much time? Time is given as of your 20 seconds. That means omega 1 value will become how much better? Omega 1 is equals to, this one is 2 pi into, this one is 1800 divided by revolution per minute. Per minute को seconds में convert करो, so divided by 60. ठीक है? 30. So that will become for me how much? ये और ये चले गया right now. So this will become for me 2 pi into, ये बन गया मेरे पास 30, यानी 2 6 12, so ये 3 2 3 2 6, so ये हो गया 60 pi. So ये हो गया omega 1. Omega 1 is equals to 60 pi. Then omega 2 is equals to 2 pi into your n2. Number of revolutions in minute. Convert that one into seconds. So ये हो गया 2 pi into, this one is nothing but of your 3000 divided by your 60. ये और ये वाला चले गया right now. So if I'm simplifying this one, ये हो गया 2 pi into 6 5 30, यानी ये हो गया 50. So ये हो गया मेरे पास 100 pi. So omega 2 value I got as of your 100 pi. What do you mean by alpha beta? Alpha is nothing but what? पूछ रहा क्या? Angular acceleration. Angular acceleration means what? Change in angular velocity divided by time interval. That means I can write as of your delta omega by your delta t. That means this one is nothing but omega 2 minus omega 1 divided by your total time दे रखा है problem में 20 seconds. यानी alpha is equals to, this will become for me 100 pi minus, this will be your 60 pi divided by your 20. तो ये हो गया कितना? 40 pi divided by your 20. ये 2 चले गया, तो अल्फा वैल्यू आया कितना? 2 pi radians per second square. आया सभी को? क्लियर है? Yes, sir. तो अल्फा इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी? 2 pi radians per second square part of a relation. Only thing you should get an idea that इस मिनट्स को हम लोग को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, उसलिए यहाँ पर n1 जो कर रहे हैं हम लोग 1800 डिवाइडेड बाय 60 कर रहे हैं, so that I'll be get the number of revolutions per second जो हो रहा ना वो आ जाए अपने को क्लियरली. ठीक है, चलो इस बेटा सर यूज फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना सर? ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इनटू टाइम. हाँ, तो फिर टाइम निकालना पड़ेगा ना अलग सेपरेट करनी. ये तो 20 पूरा सेकंड टाइम कर इंटरवल रखा दे है. रखा है. हाँ 20 सेकंड दे रखा है ना सर टाइम. डायरेक्टली हाँ, अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब काइनेमेटिक इक्वेशन लेके कर रहे बोल रहे. यस सर. हाँ कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो ये नेक्स्ट वाला देख लो बेटा. ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल. A particle moves in a circle. A particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed and time period 0.2 pi seconds. First of all, the acceleration of particle is, I'll give the options: 25 meter per second square, 36 meter per second square, 5 meter per second square, and fourth one is 15 meter per second square. Try karo sabhi log. See what are the data he has given and what is the way you can try to connect it. A particle is moving in a circle of radius de rakha hai, r is equals to 5 centimeter with constant speed and time period de rakha hai, t is equals to 2.2 seconds. Angular acceleration of the particle alpha is equals to how much? Speed is equals to constant. Speed जो है ना अपने पास constant है. तो जल्दी से करो. आंसर्स मीटर्स में है तो इसको हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है. So you know that when a particle is moving with a constant speed, so that particle is moving in a circular path, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही लगेगा. यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? AC is equals to R into ओमेगा स्क्वायर. तो ये हो गया R. ओमेगा कैसे लिखोगे बेटा? ओमेगा का वैल्यू है मेरे पास 2 पाई बाई योर कैपिटल T का होल स्क्वायर. यानी ये हो गया R into 4 into पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर T स्क्वायर.
तो ये बना कितना मेरे पास 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू रेडियस। देखो कैलकुलेशन के लिए कभी भी जो है ना पाई स्क्वायर की वैल्यू आप 10 ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेसिकली पाई स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ले रहा हूं मैं 10 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना दे रखा है 0.4 पाई का होल स्क्वायर। अच्छा पाई स्क्वायर यहाँ पर वैसे भी कैंसिल हो जा रहा, तो ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आर दे रखा है कितना मेरे पास 5 सेंटीमीटर्स ना, सो 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। तो बताओ कितना आ रहा है 4 इंटू ये हो गया पाई स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू ये हो गया फिर से पाई स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10⁻⁻²। ये पाई स्क्वायर चले गया 410.1, तो कितना आ रहा है देखो 4 एंड ये हो गया 5 दैट इज 10⁻⁻² यानी 100। कितना आ रहा है देखो बेटा ऑप्शंस में क्या दे रखा है 25, 36, 5, 15। ओके सर थर्ड कितना आ रहा है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन कितना 5, 5। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया सभी को। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा ए व्हील is rotating at 900 rpm about its axis. First of all, when power is cut off, it comes to rest in 1 minute. The angular retardation in radian per second square is. I'll give the options. First one is pi by 2. Second option is pi by 4. Third option is pi by 6. And fourth option is pi by 8. ये ऑल इंडिया AFMC में पूछा गया। सर फर्स्ट ऑप्शन। कितना आ रहा बेटा pi by 2, very good. First option will be the answer. आया किसी को और? A wheel is rotating at 100 rpm बेटा and its own axis. When its power is cut off, it comes to the rest. यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0. So I'm using the kinematic equation omega is equals to omega naught plus alpha into t. यहाँ पर ओमेगा नॉट कितना दिया मेरे पास 900 rpm, यानी ये हो जाएगा 900 इंटू नंबर ऑफ रोटेशंस कितना दे रखा है बेसिकली आरपीएम को कैसे लिख सकता हूं मैं बेसिकली ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय योर 60। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया 0 और टाइम कितना दे रखा है 60 सेकेंड्स। एक मिनट t is equal to 60 seconds, then simplify it for the given condition. See how much I'm getting the alpha value बेटा, तो अल्फा हो जाएगा यहाँ पर से दिस इज 2 पाई इंटू ये हो गया 900 डिवाइडेड बाय यूवर ये हो गया 60 और टाइम भी है मेरे पास 60। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 चले गया, सो ये चले गया 9 2 18 6, सो या सो ये हो गया मेरे पास पाई बाय 2। यूनिट क्या बनेगा बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है क्लियर बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the angular speed of flywheel making 360 revolutions
360 revolutions per minute is, बताओ जल्दी से। ये हो गया 12 पाई रेडियंस पर सेकेंड, उसके बाद हो गया 6 पाई रेडियंस पर सेकेंड, उसके बाद हो गया 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड, और उसके बाद हो गया 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील मतलब क्या, एक जॉइंट व्हील जैसा होता है ना बेसिकली, वो वाला, ये इसका एक्सेस है, इस एक्सेस पे ये रोटेट कर रहा है विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी, मान के चलो ओमेगा, एंड इज मेकिंग 360 रेवोल्यूशंस पर मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मच। आया किसी को? कितने रेवोल्यूशंस बना रहा है बेटा? 360 रेवोल्यूशंस पर मिनट, Yes, sir. यानी 1 आरपीएम इक्वल टू हाउ मच बेटा? 2 पाई रेडियंस पर मिनट ना, एक रेवोल्यूशन पर मिनट बोले तो, ठीक है ना। तो गिवन कितना है मेरे पास? 360 इज इक्वल्स टू योर आरपीएम। आरपीएम कितना दे रखा है मेरे पास? 360। तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये मैं अगर सेकंड्स में लिख लूं तो 2 पाई बाई 60 रेडियंस पर सेकेंड में हो जाएगा ये, isn't it? So for 360 revolutions कितना हो जाएगा? For 360 revolutions per minute, so we can have कैसे लिख सकता हूँ बेटा? 2 पाई बाई 60 इंटू ये कितना हो जाएगा? 360। तो कितना बनेगा? ये जीरो चला गया, 6 6 36, 6 इंटू 2 ये बन जाएगा 12, यानी 12 पाई रेडियंस पर सेकेंड। आया? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. चलो next question. A body moving along a circular path, body moving along a circular path, along a circular path of radius capital R, of radius capital R with velocity V, with velocity capital V, has centripetal acceleration, has centripetal acceleration A. First of all, if its velocity is made equal to 2v, then its centripetal acceleration is, बताओ जल्दी से। I'll give the options. 4a, next one is 2a, next one is a by 4, and next one is a by 2. बताओ जल्दी। The body is moving along the circular path of radius r with a speed v, यानी पार्टिकल मूव कर रही है इन ये सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर और इसकी वेलोसिटी है v। इसकी जब वेलोसिटी v है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है उसी डायरेक्शन में ये। अगर इसकी वेलोसिटी हम लोग ने 2 टाइम्स कर दी तो 2 टाइम्स ऑफ v, तो ये एक्सेलरेशन कितना बनेगा? ठीक है ना। एज अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, व्हाट इज द फोर्स रिस्पांसिबल फॉर ए पार्टिकल टू मूव इन द सर्कुलर पाथ बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा? ac इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। r तो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो आई कैन राइट हियर a1 बाय ओवर a2 इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर। a1 ये है, a2 अपने को निकालना है, v1 है v स्क्वायर, v2 इज इक्वल्स टू 4 into v स्क्वायर, ये वाला चले जाएगा, तो a2 विल बिकम हाउ मच फॉर मी? 4 टाइम्स ऑफ v और a। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। क्लियर है सभी को? गॉट इट? Yes, sir. अरे टाइम हो जा रहा तो बोलो बेटा, जरा मीटिंग अगर एंड हो रही तो मैं रिस्टार्ट कर लूंगा फिर से जल्दी से।
फोर्थ वन था, ये फिफ्थ वन हो गया, ये सिक्स्थ वन। नेक्स्ट वन इज सेवेंथ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अच्छा वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल, ए पार्टिकल is moving in a circle. A particle is moving in a circle of radius r, of radius small r, with constant speed, with constant speed, with a constant speed v. First of all, the change in velocity, the change in velocity after the particle has traveled, after the particle has traveled a distance, a distance equal to 1 by 8 of the circumference of circle, circumference of circle. ठीक है ना? This is a question. I'll give the options. First one is 0, second one is 0.5000 v, और third one is 0.765 v, और fourth one is 0.125 v. चलो जल्दी से ट्राई करो। A particle is moving in a circle of radius r with a constant speed v. The change in velocity after the particle has traveled a distance equal to 1 by 8 of the circumference will be equal to how much? ये निकालना अपने को इंपॉर्टेंट है। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है, मैंने कल ही आप लोग को बोला था इसका फॉर्मूला भी। अगर ये पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी मान के चलो यहाँ पर है v, तो मान के चलो यहाँ पर जब जा रहा है तो यहाँ पर भी v। अगर इसका चेंज निकालना है तो डेल्टा v का मैंने कल फॉर्मूला डिराइव किया था। सो व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर गेटिंग राइट नाउ? सो दैट विल बी इक्वल टू योर, कितना था बताओ? 2v into your sin theta by your 2। याद है ये कैसा आया? यस सर। ये कल डिराइव किया था मैंने। चेंज इन वेलोसिटी सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में भी लिख सकते हो। अगर ये v1 है, v2 है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स लिख ले रहे हो तो अंडर रूट ऑफ v1 v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ऑफ 2v स्क्वायर इनटू cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा इज नथिंग बट 2 sin स्क्वायर थीटा। सिंपलीफाई कर लो। सो चेंज इन वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? 2v into sin थीटा by 2। वेलोसिटी तो v है, थीटा वैल्यू नहीं दिया, तो थीटा वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? द पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड ए डिस्टेंस 1 by 8 ऑफ योर सर्किल, यानी एंगल ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 1 by 8 ऑफ द सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा बेटा? तो बताओ जल्दी से, यहां से मैं निकाल रहा हूं, देखो। एंगल मेड इन 1 by 8 विल बी इक्वल टू हाउ मच? दूसरे पेन से लिख लेता हूं मैं, या ब्लू पेन से लिख लेता हूं। यानी थीटा विल बी इक्वल टू योर 1 by 8 of circumference of the circle, that is nothing but 2 pi into r divided by your r। होता है ना? थीटा is equals to arc length by radius। how much arc length? 1 by 8 of your arc length divided by r। थीटा का फॉर्मूला याद है ना? थीटा is equals to your arc length divided by radius बोला था हम लोग ने। आर्क लेंथ कितना है? टोटल सर्कमफ्रेंस कितना बना रहा है? 1 by 8 टाइम्स ऑफ 2 pi r, यानी 2 pi by r by 8 into your radius r। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है देखो। सो ये r चले गया, 2 1 जा 4 जा, तो ये बना कितना? पाई बाय 5। सर थीटा 45। सो थीटा, वेरी गुड। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्रीज। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? यस सर। तो डेल्टा वी कितना आ रहा? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 2v इंटू साइन थीटा, वैल्यू कितना है? 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2।
होता है ना? ठीक है, मैं फॉर्मूला डाल के कर लेता हूँ नहीं तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, तो कितना था ये, अंडर रूट ऑफ, ऐसे भी आ जाएगा, सेम कैलकुलेशन ही होगा. सो दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 2v स्क्वायर माइनस ऑफ योर 2v स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर cos थीटा, सॉरी cos थीटा कितना आया 45 डिग्रीज, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इंटू 1 बाई योर रूट 2. तो v स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर 2 कॉमन हो गया, तो दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 2 v स्क्वायर हो गया, सो इट इज 2 माइनस 1 बाई योर रूट 2, है ना? टू वी स्क्वायर कॉमन आएगा ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ योर 2v स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2, तो v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ ये हो गया 2 माइनस ऑफ योर 2 बाई रूट 2. 2 कैसे लिख सकता हूँ मैं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये बन जाएगा v इंटू अंडर रूट ऑफ योर 2 माइनस ऑफ रूट 2, यानी v इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.4. So this one is nothing but of your v into under root of your 2 minus 1.4, कितना आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 0.6. 0.6, है ना? यस कितना आ रहा है देखो उसका वैल्यू, रूट 0.6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेके देख लो कितना आ रहा है. कितना आ रहा है बेटा, यानी 6/10 रूट 6, अप्रोक्सीमेट में बोलो, नजदीक नजदीक में 0.77 समथिंग आ ही जाएगा, सो 4. तो ऑप्शन है क्या कुछ देखो इसमें नजदीक में 0 पॉइंट, ये तो नहीं होगा, एक तो थर्ड ऑप्शन नहीं कर पाए आंसर है, थर्ड ऑप्शन लिख सकता हूँ, ठीक है ना? यस ये वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ही क्लियर हो, ज्यादा कुछ भी नहीं है. सो इसको sin 45 डिवाइडेड बाई 2, isn't it? उसको इसकी वैल्यू डाल दो, निकल जाए इसका, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क डाला है कि इसको थोड़ा आप लोग कंसंट्रेशन कर लो कैलकुलेशन का, रिमेनिंग पार्ट आराम से निकल जाएगा. क्लियर है? यस सर. चलो सर एक बार फिर से समझाते हैं आप थीटा के बाद का? यहाँ का बेटा, जी ये जो फॉर्मूला आया मेरे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सप्रेशन ऑफ वेक्टर्स. अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप इस मेथड से करो. कौन सा मेथड है यहाँ पर, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यूर पैरेललोग्राम वेक्टर लिखते हैं देखो, वी स्क्वायर प्लस 2 वी इंटू कॉस ऑफ योर थीटा, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ऑफ कॉस इंटू थीटा, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर, ये माइनस 2v स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा वैल्यू हो गई 45. So under root of 2v square minus 2v square into cos 45 is 1 by root 2. तो ये हो गया 2v square common 1 minus 1 by root 2. So इसमें से v square बाहर आ गया, so it is under root of 2 minus 2 by root 2. So I can write this 2 as what, root 2 into root 2 लिख सकता हूँ क्या, एक रूट चले गया तो 2 minus of root 2. root 2 की वैल्यू 1.4. So v into under root of 2 minus 1.4 value is root 0.6. root 0.6 is nearly equal to 1, यानी 0.774 के नजदीक नजदीक आ जाएगा. ठीक है? यस सर.
यस थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि थोड़ा आप लोग इसको कंसंट्रेशन कर लेना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट वाला देखो, फिर से एक बार बोलूं, क्लियर है ना? बोल रहा है द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस r विद अ स्पीड कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एवरीवेयर द v स्पीड इज आस्किंग द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर के लिए अगर ये फॉर्मूला याद है वेक्टर्स में तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा सीधा, नहीं बोले तो यू नीड टू राइट द फॉर्मूला एवरीथिंग एंड राइट ट्राई टू डू इन दिस वे बेसिकली। ठीक है, Yes, sir. 7th 1 हो गया।